Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's ये देखो भाई, अल्लाह ताला के करम से कैसे चीर फाड़ के रख दिया मार्केट को मेरे TGS के स्टूडेंट ने। जो काम तुम्हारे मेंटोर्स नहीं कर सकते वो काम अल्लाह के करम से मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये देखें, इनकी ट्रेड देखें। हाँ जी भाई, कैसा दिया फिर मेरे स्टूडेंट ने। अपने किसी मेंटोर को ला के दिखाओ, मेरे इस भाई के साथ खड़ा कर दो, वो तुम्हारा मेंटोर शर्म से ही मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जमा मुबारक। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें आज जो मज़ा आ गया ना, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि यार जिस जगह पे मैं फंसा होता हूँ ना, आप मुझे निकाल देते हैं। यानी मॉडल 2022 और ये सिल्वर बुलेट, वो मैंने कोई 100 दफ़ा माइकल की यानी ये वीडियोस मैंने रिपीटेडली देखी कि यार वो तो बता रहा है मगर आगे वर्क क्यों नहीं होता। समटाइम्स वर्क होता है, समटाइम्स नहीं होता। आज आपके लेक्चर सुनने में वो सारी जो हिडन चीज़ थी ना वो खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। यानी मैं आपको बता नहीं सकता। यानी मेरी तो हर जो भी नोट आता, जो भी लेक्चर आता, मैं ऑनेस्टली मैं आगे चल रहा होता हूँ। मैं माइकल को सुना हुआ है, अभी तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसकी हर लाइव भी सुनता हूँ, उसके हर लेक्चर भी सुनता हूँ, अभी तक कंटेंट उसका देख रहा हूँ मैं। मगर जब आपका लेक्चर कोई नोट आता है ना, वो उसमें उसने जो चीज़ें नहीं बताई मुझे सारी इसमें मिल जाती हैं। आपने कमाल लेवल का उसको डिकोड किया हुआ है। माइकल के बाद आप ही माइकल हैं। अब मुझे तो लगता है कि माइकल से ऊपर आप हैं, यकीन करें। ठीक है, उसके पास बड़ा नॉलेज होगा मगर वो उसने फिर दिया नहीं है। मगर जो आप दे रहे हैं ये उसके लेवल से ऊपर का कंटेंट है, यकीन करें। डिकोडिंग में यानी अखीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ना होते तो आज भी हम खज्जल ही हो रहे होते कसम से ट्रेडिंग में। मुर्शद आज के लेक्चर के बाद ना, यकीन करें आपके अल्फाज हैं, ये मार्केट मेकर की ऐसी की तैसी उल्टे सीधे थप्पड़ पड़ेंगे। सही गर्दन से पकड़ा दिया आपने। यानी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने काम ही खत्म कर दिया इन 2 लेक्चर्स में। यकीन करें 2 लेक्चर्स में पूरी मार्केट की तबाही फेर दिया आपने। coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest.
कल जो FOMC पे क्रैश आया, ये देखें मैं अपने TGS के व्हाट्सएप ग्रुप में इन लोगों को क्या कह रहा था, लग बेरिश रही है मार्केट। इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखें, अभी क्रैश आया नहीं था, ये 11:16 PM मतलब न्यूयॉर्क अमेरिका के 2:16 PM। उसके बाद अगली पिक्चर में आए, ये देखें बाकायदा मार्किंग की हुई है, ये लोज S&P के। इन लोगों को मैं यहाँ पे वॉइस नोट नहीं सुना सकता जो ग्रुप में भेजे हुए थे, इन लोगों को मैं क्लियर बोल रहा था कि इन लोज पे नजर रखें। ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये तुम्हारे मेंटोर्स हैं जो तुम्हें सपोर्ट पे स्टॉप लॉसेस रखवाने का कहते हैं, हम इनको टारगेट करते हैं। ये मैंने बाकायदा एरो बना के भेजा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगली पिक्चर देखें, आपके दिमाग की तारें हिल जाएंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने लोगों को बोला कि मार्केट बेरिश लग रही है और इन लोज पे नजर रखें, अल्लाह ताला के करम से तोड़ तोड़ गिरती हुई मार्केट नीचे गई। हम किसी फेड चेयर वाले चाचे को नहीं सुनते, हम किसी FOMC स्पीच पे कोई फोकस नहीं रखते कि वो क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रहा। बाइंग सेलिंग प्रेशर से मार्केट ऊपर नीचे होती नहीं है, कब से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं। ये देखें, यहाँ पे हम लोग क्या कुछ देख रहे थे, मैंने क्या इनके सामने एनालिसिस किया हुआ था, वो एक अलग साइंस है, उसको रहने दें। लेकिन इस प्रिडिक्शन को देखें, तुम्हारे जितने छोटे छोटे मेंटोर्स आजकल आ रहे हैं ना, जिन्होंने मेरा पकड़ के हिलाना सीखा, वो सारा मेरा यूट्यूब का एनालिसिस उठा के अपने चैनल्स पे डालते हैं। और जो तुम्हारे दूसरे मेंटोर्स हैं जिन्होंने तुम लोगों को फंसाया हुआ है, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उनको तो वो तो किसी खाते में नहीं आते। ये व्हाट्सएप की चैट ही मेरी इस चीज को साबित कर देती है कि मार्केट ना तो बाइंग प्रेशर से ऊपर जाती है ना सेलिंग प्रेशर से नीचे आती है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी किस्म का सेलिंग प्रेशर नहीं देख रहे थे। ये प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया हुआ है। और ये TGS वालों से पूछो, उनको मैंने किन किन लेवल्स के बारे में मार्किंग करवाई थी। किसी किस्म की स्पीच को हम नहीं सुनते, किसी किस्म के बाइंग सेलिंग प्रेशर पे हमारा फोकस नहीं होता। TGS द गॉड फादर सैंक्टम के ग्रुप में जो मैं टेप रीडिंग कराता हूँ, वो बेसिकली टेप रीडिंग नहीं है, वो मार्केट मेकर की गपशप है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। आए आपको इसकी छोटी सी झलक दिखाते हैं। आज जो मार्केट में क्रैश आया वो US की स्टॉक मार्केट ओपनिंग के बाद आया। US की स्टॉक मार्केट ओपनिंग 9:30 AM अमेरिकन टाइम पे होती है, जब पाकिस्तान में 7:30 PM हो रहे होते हैं। इस टाइम, इस वॉइस नोट के टाइम पे नजर रखें। ये वॉइस नोट मैंने 1:34 PM पे भेजा था, ठीक है। 1:34 PM, तकरीबन 6-7 घंटे पहले मैंने इनको बता दिया था कि आज का बायस हमारा बेयरिश है, मतलब मार्केट नीचे आएगी। इस वॉइस नोट को सुने जरा। जो नैस्डैक है ना, वो आप लोग उसको देख रहे हो अगर, तो वो जो डेली का ग्रे पूछ जो मैंने कल सिंपोजियम लेक्चर में बताया, वो उसको ऐसे लग रहा है ना कि फेल कर रहा है शायद, लेकिन अभी उसको आपने देखना 4 आवर के टाइम फ्रेम की नज़र से कि उसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है कि नहीं। लेकिन जो S&P है उसको आप डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो वो अभी तक ऐसे दिख रहा है कि वो बेरिश इमीडिएट रीबैलेंस कर रहा है, ठीक है। और वो वीकली बुलिश गैप जो कि इन्वर्जनली बेरिश अभी एक्ट कर रहा है, उसके भी 50% के नीचे है, और उसने वो 4 आवर वाला बेरिश गैप भी फेल नहीं किया हुआ S&P ने, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको ओवरऑल मार्केट को अभी तक के लिए बेरिश की नज़र से ही देखेंगे, ठीक है। सुन लिया क्लियरली, 6-7 घंटे पहले मार्केट ओपन होने के 9:30 ओपनिंग अमेरिकन, जो पाकिस्तानी 7:30 PM होते हैं। मैंने 1:34 PM पे वॉइस नोट भेज दिया था। आए आपको चार्ट में लेके चलते हैं। ये देखें, जब मैंने वॉइस नोट भेजा था 1:34 PM मतलब अमेरिकन 12:34 AM, ठीक है। ये टाइम पे नजर रखें, यहां पे थी मार्केट, ये नीचे टाइम पे नजर रखें, मतलब कि ये चल रही थी मार्केट। तकरीबन उस टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही थी। ऊपर जाती मार्केट पे मैंने बोला था कि हमारा बायस बेरिश है, लॉजिक, रीजन सब कुछ बताया। उसके बाद क्या हुआ, 9:30 ओपनिंग के बाद कैसे तोड़ो तोड़ मार्केट नीचे आई है, कैसा क्रैश आया। आपको डेली के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं और वहां दिखाते हैं कि डेली की कैंडल क्या बनी है। ये है आज की डेली की कैंडल, ठीक है। ये बिल्कुल एक झलक दिखाई है आप लोगों को मैंने। इन लोगों को अल्लाह ताला के करम से जिस किस्म की मैं टेप रीडिंग कराता हूं, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होता है, पूरा न्यूयॉर्क सेशन, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या नहीं होगा, सब कुछ आप सोच भी नहीं सकते। ये अल्लाह ताला का करम है। But it's just a price I pay. Destiny is calling me. Open up my eyes. 'Cause I missed the price side.
Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. And I just can't look, it's killing me and taking control. Jealousy turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I missed the bright side. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick. एक बंदा आया मेरे घर, मेरे ख़ानदान का नहीं था, बहुत दूर पर ऐसे कुछ लिंक था। बहुत बड़ा पिंक फूल था वो, नीचे कुछ था ही नहीं उसके। बैठा हुआ मेरे साथ, तो सारे बैठे हुए, उसके घर वाले, मेरे घर वाले। तो अब ना सब गपशप कर रहे हैं, एकदम ज़ाहिर है बातें करते-करते ना एकदम एक सन्नाटा सा हो जाता है ना, सब चुप हैं ना एकदम। मेरे साथ ही बैठा हुआ था, मेरी तरफ एकदम मुँह करता है मेरी तरफ एकदम मुँह करता है, मुझे कहता है मुझे कहता है, और ठीक है आप? मेरी मेरी तो फट गया समझ नहीं आती लोग इतने डिसेंट क्यों होते हैं। मतलब मैं ठीक ही हूँ, उसके साथ बैठा हुआ हूँ, पहले बात हो चुकी है, सलाम दुआ हो चुकी है, एकदम मेरी तरफ मुंह करके कहते हैं, और ठीक है आप? कसम से मैं उसको बड़ी मुश्किल से जवाब दे भाग गया वहां से हंस हंस के